आज ही स्टार्टिंग एट रुपीज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम खेलेंगे पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर का। लेकिन आपको शायद से तो मालूम ही होगा कि मैं ये खेलता नहीं हूँ। खेलता हूँ पर लेकिन यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ खेल के। बस जब हॉरर आती है तब मैं डाल दिया कर रहूँगा। तो अभी कुछ हॉरर आने वाला है इसलिए मैं इसको चालू कर दिया हूँ। तो हम अभी फ्यूशिया सिटी में पोकेमॉन सेंटर का है। हाँ, पोकेमॉन सेंटर चलते हैं सेरेलियन सिटी। सेरेलियन सिटी में मैं अपना नॉर्मल कपड़ा पहन लेता हूँ बाय द वे। और अब मुझे यहाँ का जाना है। अब मुझे यहाँ जाना है। अरे ये तो मैं जिम में चले गया मिस्टेक है। अब मुझे यहाँ जाना है बिल्ली के पास, बिल के घर के पास। बिल का घर बोली वाला है। तो यहाँ पर हमें यहाँ जाना है। तो मेरे पास सर्फ है इसलिए मैं पॉलीराइड के ज़रिए ऐसा जाऊँ। पोकेबॉल ले लूँ पहले मैं। थंडर का ये पिकाचू को सिखाऊंगा मैं। पिकाचू बोल रहा हूँ, पिका। I like swimming. I swim here every day. Mummy told me not to swim in the deep end, but I am not scared. You should really listen to your mother. Swimming in the deep end is dangerous. Don't worry, I usually swim in the shallow area, but a nice creature told me help keep me safe today, so I can swim in the deep end. Creature? Yeah, it swims here every day. He said he is lonely. He asked me to swim with him today in the deep water. Wait, what? He said he's been starving for a long time. Look, I even got him some food. You need to get out of the water. You are scaring me. Hurry up. Get up. Yeah, get out of the water. It's here. He sounds different today. That thing is dangerous. Get out of the water. Ah, something is grabbing me, my leg. Huff, huff. तो मुझे यहाँ पर गेम सेव कर लेना चाहिए। अब यहाँ ऑफिसर जैन के पास जाना है। Duke, I know it's you. Oh, I'm sorry. I'm sorry, kid, but I'm investigating this lake here. It's dangerous. You should leave. Why is she investigating this lake? Could it be because of that monster? Tell her about that two victims. Are you investigating this lake because of a monster who is kill people in Cerulean City? Wait, no way. Two victims? So you saw the monster taking two victims. I knew it. Knew what? No thing.
So why are you investigating this lake? Cerulean City is a city surrounded by a large body of water. Water runs deep underground. It's not unusual for large bodies of water from two different locations to link up with each other underground. Huh? Ah! I need to get down there. What? What are you doing here down here? I'm here to help. Are you? Yeah. Wait. Are you all right? I'm fine. Thanks. Thanks, Red. This place sure is damp. I never thought there would be an underwater cave here. Huh? ये क्या हो गया? ऐड Begin a delicious innings with your favorite food. कितने ऐड Order आएंगे? now on Zomato. Red, what's wrong? That's the little girl, one of the victims. Sweetie, it's not safe. Here, come with me. I'll take you back home. She could not hear us. I want to go home. Mummy, help me. Mummy, I'm hurt. I'm bleeding. Mummy, I'm bleeding. Make it stop. She disappeared. We gotta get out of here. No, look. Help us. Help us. You should head back up, Red. It's dangerous. Here I am going to rescue them. Ah, damn it. I must be twisted. My ankle when I fell down. You stay here. I'll rescue them. Okay, thank you. चलो जाते हैं. अरे बाप रे माँ. चलो पकड़ते हैं. कौन सा पकड़ाई से पकड़ी? मास्टर बॉल से तो बिल्कुल नहीं. ये मास्टर बॉल मुझे स्टीव ने दिया था. स्टीव वैसे भी तो अभी डेड हो चुका है. बुड्ढे ने मार दिया. यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए खाली एक ही पोकेमॉन मिलेगा, वो है मडकिप. मडकिप और मास्टर. और हाँ, मडकिप एक्स भी. मडकिप इसलिए क्योंकि ये स्टोरी स्वाम्पर्ट से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा. लेट्स गेट out here. He can't hear me. I could be been the best scientist in this universe if only the stupid director from the Pokemon Association did not put a stop to my experiment. I could be created hybrids, bunch of wimps. I'm not going let him stop me from achieving my fame. I just do the experiment in secret. In fact, it's better this way. There are no protocols I need to adhere. I can go over the limit. I found a mudkip and named him experiment number 626, or even for short I injected even with various chemicals
that would stunt its growth. The side effects have caused even to suffer chronic pains and develop. The subject was strong, but the following year even began to show signs of dying. I can't let it die. If even dies, then all my research will be been for nothing. In a desperate attempt, I placed both my Gengar and even hybrid machine. The hybrid machine joined the two Pokemon into one. It was a success that certain Pokemon will be been grateful for all I have done for it. However, that ungrateful Mudkip killed me the moment I. क्या ये मर चुका है? Its spirit opened the machine. Disappear? So now what happened? हाँ Starting at rupees वो कुछ एक्सपेरिमेंट का ही बोल रहा था कि उसने अपना गेंगार दिया और एक मडकिप ने उसको मार दिया. Let's get out of here. She can't hear me. My name is Cindy. I am just an ordinary high school girl. I have a friend who I have a crush on, but I don't think he like me. I once adopted a pet Marstomp. It grew and evolved into a Swampert. I named him Ian. Ian was strange. He did not look like a regular Marstomp, and he did not like my dad either. When my dad and mom passed away and it was only me and Ian left, that's when I started having nightmares. I kept dreaming of my getting dragged into a lake by a mysterious force. When I woke up, I often see Ian next to me smiling. I knew something was not right, so I was making plans to move away from Cerulean City. The nightmare before, I hung out with my friend Andrew. One last time, I made sure to avoid any large body of water, Andrew, and I decided to take a walk around Cerulean City. I was so distracted by weather. I should confess to him that I did not realize I was near a lake, the one in my dreams. When I realized it was too late. Ian jumped out of the water and dragged me down the bottom of the lake. He started at me before swimming away, thinking that Ian changed his mind. I tried to swim back to the surface. That when I noticed a school of baby mudkip were swimming towards me.
They were hungry. Disappear? यहाँ पर सेव कर लेता हूँ. मटकी मास्टम स्वाम्पट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर मटकी मस्त लेवल है इस मटकी. लेकिन मैं उसको पकड़ने के लिए बचा कर रखता हूँ. उसको मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे उसे पकड़ने का मौका है. ये वही लड़का है ना? मैं ये जिंगो. आई एम फ्रॉम द होन रीजन. My friend gave me her mudkip before I moved to Kanto. It was a memento, a symbol of our strong friendship. I named the mudkip direct after a few months in Kanto. My friendship circle has increased, which caused me to neglect Derek. I was young. I was selfish. I did not have the patience to take care of Derek anymore, and so I abandoned him in the water of Cerulean City and never saw him again. 10 years later, I was happily married with a daughter named Cindy. Cindy तो वही लड़की है ना जिससे अभी बात किया था. Cindy loved the outdoors. One day she brought home a strange looking marshtomp. I was startled by its signs. That marshtomp eyes reminded me of Derek. However, that can't be science. The lifespan of a wild mudkip is only 5 years. Derek would be being dead a long time ago. 6 years later, a terrible Begin a delicious innings with your favorite food. Order now on Zomato. a terrible tragedy struck our family. My beloved wife drowned in the Cerulean City water. I kept having this nightmare of wife getting dragged down into the lake by a dark figure. One night I woke up and saw my daughter Marshtomp, now a swampert, next to my bed. Its eyes were staring at me. It excited the house. I ran after it, not knowing that he was leading me to the exact lake where my wife was drowned. At that point, I knew it was too late. Disappear? चलो अब कहाँ जाने का? हाँ यहाँ पर. Andrew, I found you. He can't hear me. I was Cindy's best friend. Cindy? सब लोग Cindy बोल रहे हैं. Best friend है. Actually, the truth is I love her, but I never had the guts to tell her that I really wanted to tell her my true feeling. But there was no use. It's too late because she now gone. She was abducted
by that monster. I told everyone about Cindy's disappearance, but no one would believe me. In fact, I think I am losing my mind. I have been seeing Cindy anywhere in Cerulean City, but I know it's just an illusion. She gone. She'll never come back. It's too late. She'll never know how I feel about her. Andrew. ओ भाई सेव कर लेता हूँ मैं, नहीं तो बाद में पढ़ना पड़ेगा मेरे को ढेर सारा। मडकिप, सारे मडकिप एकदम मस्त लेवल है, पर लेकिन मुझे पोकेबॉल्स बचानी है। चलो अब इस बच्ची के पास। Let's go out of here. She can't hear me. I found a mudkip sleeping near a very dirty laboratory. I approached the mudkip and started patting it. The felt weird when I was patting it. It was cold and hollow. I took the mudkip in, nursing it and raising it as a pet. I named the mudkip Vex. My sister and I played with Vex every day, but my meow would always be afraid to go near Vex. One night I was woken up by a strange growl. काय की आवाज आई? काय की आवाज आई? I followed the noise to my basement and I saw my meow growling at Vex. The next morning, Meow suddenly jumped in front of a moving vehicle and dead. क्या मर गया इसका Meow? After that traumatic accident, I began locking Vex into the other room. When I go to sleep one night, I was woken up by laughter. The laugh came from Vex, who was standing in my यार कितने लोग के पास मटकी ये सब था in my doorway. It sounded like a human. इंसान की तरह आवाज निकाल रहा था. When I glanced at the wall, I saw a demonic shadow. A few days have passed and I noticed my mom and sister have not spoken to each other for a long time. When yaar. Begin a delicious innings with your favorite food. Order now on Zomato. When they do their conversation were just a simple hello and goodbye. I walked into the kitchen and prepared food for Vex. My sister then asked me a question. What would you do if I was in danger? I replied that I protect her, my life. She पढ़ा नहीं यार. Would you still protect me with your life, knowing that I killed your sister and mom? कौन बोला कि मैंने तुम्हारे मॉम और सिस्टर को मारा? At the point I realized यार अब
मोबाइल गिर गया और टच हो गया। Was talking to Vex and then everything black out when I woke up. I was drowning at the bottom of the lake. As I looked around, I saw the rotting corpse of my sister and mom disappear. तो अगली बारी कहाँ जाने की है? हाँ, ये यहाँ से मैं सीधा चले जाऊँगा। यहाँ कहीं मडकी पैक्स मिलेगा ना? नहीं, सिर्फ मडकी पे मिला। वैसे मेरे पास तो बहुत अच्छे लेवल के पोकेमॉन्स हैं। 50 लेवल का होने वाला एक पॉलीरैप और एक कभी 40 लेवल का एग्जीक्यूट 1 और 25 लेवल का पीका। ईवी को इवॉल्व कर देता हूँ डार्क टाइप में। चलो, क्योंकि वो एक डार्क टाइप, ये घोस्ट टाइप है गेंगार। तो बैग में जाता हूँ। मिस्टियन तो ड्रैगन टाइप है। इंसेक्टियन, बोल्डियन, एंशियन, टॉक्सियन, एरियन, ब्रॉलियन, साइलियन। हाँ, डार्क टाइप का उम्ब्रियन है ना। एक और लेवल अप हो जाएगी, फिर 40 लेवल कर देगा। इसके लेवल कितना? और बाप रे, क्या लेवल है। हंटर बोला क्यों मिलेगा? अच्छा, महंगा है ना। How many people did you rescue? None. What? Did something happen? They were just illusion. Illusion? Psychic power? Red, we need to get out of here. Something Maroon is after us and it's toying with us. Huh? Huh? What are you doing, Red? You go first. Red! I heard you. You won't skip from me? I am going to end this strategy. चलो यहाँ से अभी यहाँ पर। चलो अब चलता हूँ। चलो फटाफट मैंने इसको स्किप कर लिया। अब जाता हूँ उस गेंगार को क्या लेंगे। रुको, पोकेमॉन स्विच कर लेता हूँ। Begin a delicious innings with your मेरा favorite पॉलीरैप फाइटिंग टाइप पे जो वेस्ट टाइप के सामने वीक पड़ेगा, इसलिए उसको आगे नहीं रखूंगा।
मैं एम्ब्रियन को आगे रखता हूँ। स्विच। और उसके बाद डार्क टाइप पर क्या भारी है? डार्क टाइप पर तो होगा भारी फेरी। वैसे कभी फेरी टाइप कभी तो कोई टाइप का नहीं है, पर लेकिन उसके पास बहुत सारे फेरी टाइप्स अटैक है। और इसको चलो यहाँ पर सेव कर लेता हूँ मैं। कभी न्यूज़। हाँ यही है वो स्वम्पॉट। इसकी एक स्क्रीनशॉट लूँ। वैसे लेने की तो जरूरत नहीं है। Foolish boy, you are that eager to be my next meal? Who are you? Ha ha ha! I go by many names: Derek Evans, Vex, Ian, and Luke. Luke? Who named him Luke? I can tell what you are thinking. Luke was the name given to me by my original trainer. If she did not give me away, I would not have served. I know you suffered, but many of those people did not deserve the fate that you'd given them. Most of them loved and took care of you. Love me? Ha ha ha! It is fun. It's seeing the pain and agony on a person's face. I remember my dad once told me that there's no such thing as an evil Pokemon, just evil trainer. You never suffer. Because you are not the Mudkip who was tortured by the scientist. The Mudkip never lived through by hibernation process. You are the creature who merely processed the corpse of the rotting Mudkip. You are Gengar, the living shadow of a human. Tennis radar? कौन बोला ये? Impressive. You are right. I am Gengar. I was born from the shadow of the murderer. Denies radar. I just love killing and eating victims. Ha 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 ha! As you said, the original Mudkip did during the experiment. I was forced into its body thanks to that crazy. थोड़ा पढ़ना बंद करता हूँ. Now say good night. अरे बाप रे बाप, इसकी एक स्क्रीनशॉट तो लेना बनता है. जब वो नहीं ले पाए. बाइट अटैक करता है. यार मेरी ईवी का लेवल बहुत कम था, इसलिए थोड़ा वो है. हाँ कभी कॉस्मिक पावर नहीं, मून ब्लास्ट.
ब्रेक इट चल के यार, कभी इस वक्त कंफ्यूज मत हो। हाँ चलो गया ये। No, I won't allow myself disappear. I can't, I won't allow. Ha! You are finally out of the swamp. लखनऊ हो या हैदराबाद, ऑर्डर करें बिरयानी आज ही, स्टार्टिंग एट ₹149। Swampert corpse. He he he. Red, I am Gengar. I am a shadow. I always be around. I'll be back one day, and you tell. Then you better watch your back. Swampert. Huh? It's still alive. हाँ, ये तो जिंदा है अभी. It's look like it's at peace. Swampert. Luke, I should have never given you away. Luke, this case is officially closed. अच्छा, तो लगता है कि जो ल्यूक है वो स्वाम्पर्ट, वो ऑफिसर जेनी का है और उस स्वाम्पर्ट का नाम ल्यूक है। और वाह, बहुत बड़ी केस चल जाती है मानने। चलो फटाफट यहाँ से एग्जिट करते हैं। हाँ, सेव करना तो बनता ही है। अब काय के मडकी पे मिल रहे हैं। अरे शिट, मैंने तो स्वाम्पर्ट को तो कैच ही नहीं किया यार। हंटर मडकिप एक्स, इसको कॉस्मिक पावर से थोड़ा वो कर दूं। शैडो पंच, इसको नॉर्मल टाइप अटैक करता हूँ क्या? ये भाई फेरी वाइंड करता हूँ यार, मरना नहीं। हाँ, ओह शिट, लगातार सब मर रहे हैं। पीका को मिलता है बैग, ग्रेट बॉल, जाओ। ओह शिट, अब पॉलीराथ ही कुछ कर सकता है। फाइटिंग टाइप अटैक में बबल बीम, आइस बीम करता। चलो, क्या नॉट वेरी इफेक्टिव।
चलो अब तो आ जाए मल्टीप्लेक्स। मास्टर बॉल गलती से भी यूज नहीं करने वाला है। यस 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 यस, फाइनली मैंने मल्टीप्लेक्स को पकड़ लिया। इतना अच्छा नाम है, मल्टीप्लेक्स हटाई क्यों? फाइनली लखनवी हो या ओ हैदराबाद, सेव कर लेता हूँ। हाँ पहले सेव कर लेता हूँ। 149। हाँ चलो अब गेट आउट ऑफ हियर। तो मेरा बोनस चैप्टर खत्म हुआ, बहुत लंबा था। ये क्या है? ये कौन सा पोकेमॉन है भाई? बेबे is right. The blue Pokemon in here drawing really does exist. All right, I better take a photo of it. Uh-oh, look like I made it model. अरे वाह, क्या पोकेमॉन मिल रहे यार। इसको रेजर यूज कर देता हूँ। क्या शैडो बॉल? तो ये इससे ना मानेगा, ना मानेगा, मार खाएगा। अरे Poliwrath! Poliwrath! आइस भी इतना हाँ वेकअप स्लैप करता है इसके ऊपर। क्या इसको अवॉइड कर देती है? शैडो बॉल मरने पर कुछ इफेक्ट ना कर से डायनामिक पंच। क्या ये भी? शट बबल भी करता है यार। क्या क्या अवॉइड करेगा ये? चलो एग्जीक्यूट को निकालता हूँ। क्या सब अवॉइड कर देगी? सेव कर लेता था। बैग से कुछ ले लेता हूँ। पोकेबॉल यार, लास्ट पोकेबॉल है, रिस्क नहीं लूँगा। उसके बाद मास्टर बॉल सीधा सही है। स्टोन ये सब डाल सकते। रिवाइव दे देता हूँ आईडी स्टोर को। चलो लगता है सुपर मोशन देना पड़ेगा। चलो प्लीज ये भी अवॉइड कर दी इसने। लखनवी हो या हैदराबाद, ऑर्डर करें बिरयानी आज ही, स्टार्टिंग एट ₹149। यार ऐसा करेगी मरीन।
सोलार बीम। सोलार बीम से तो ये चले जाएगा। लीच शेड कर दूँ क्या? हाँ, लीच शेड कर देता हूँ। क्या? ये लास्ट बॉल है। आजा 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 आजा। यस 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 यस। कितने मिस्टीरियस पोकेमॉन पकड़ रहा हूँ मैं। नहीं, ये पिकाचू का यही किस्सा है ना। ओ भाई साहब, हाँ सेव करना क्यों भूल गया मैं। इतने मिस्टीरियस पोकेमॉन मिल गए ना आज। इन दोनों के पास तो डिजिमोन है ना। ये दोनों बिल्कुल स्टीव की तरह ही दिख रहे हैं, जिसने मुझे मास्टर बॉल दिया था। तो फाइनली वीडियो की एंड होने जा रही है इतने टाइम बाद। वाह, दैट्स कूल डिजिमोन। आई ट्राइड यू में प्रेशर्स नमेमोन for that your Volgramon. No way. Volgramon is not for trade. ऐसे कुछ बोला था ना? चलो एक बार यहाँ पर सर्च करके देखते हैं, क्या पता और कुछ मिल जाए। Tentacool. So friends, आज हमने बहुत सारे मिस्टीरियस पोकेमॉन पकड़े हैं और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन इसी गेम में मिलते हैं, पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर। तो आज हमें बहुत मज़ा आया है। तो थोड़ा आगे जाकर फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो जब तक के अलविदा दोस्तों, यहाँ पर सेव कर देता हूँ।